Hello guys, welcome back to my channel Life and Lessons. I hope you are doing well. So in today's video, I'll be talking about how much rank you need to score in order to get selected in Presidency University. What are the procedures that you need to follow? Like what are the techniques by which you can understand that how much you need to score and if your score is like this, will you get selected or not? I'm going to tell you this in detailed way. So please stay and watch the video till the end. So as you know कि इसकी जो application process होती है ये बहुत ही एक लंबी process होती है. It's a very long process and you need to go through several steps in order to get selected. So basically the thing is it starts from the thing that you have to fill your admission form. You need to go to a cyber cafe or open the link in desktop and just get enrolled, fill your form and fill up all the details, which happens basically in the month of March, I guess March or April. And then your dates will be announced for the admission tests, which is in this year it is on 21st and 22nd June. And after that you will have to prepare for your entrance test and to give your entrance test, and after giving your entrance test the whole procedure starts. Now उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. So the thing which happens is that when you give your entrance test, after that you have to wait for at least 1 or 1.5 months. After that you will get your rank cards, your results will be declared, and the results will be, you need to check, you keep on checking your mails. Okay, it will be notified to you that yes, your results are declared, and the results will be available to you in the form of rank card. Okay, in which your GMR will be mentioned. You need to download it, the PDF, and get the printout of it. Okay, so in that rank card your GMR will be mentioned, which is known as the general merit rank. Okay, depending on that general merit rank your selection will be held. Now how will you get to know that how much you need to get in order to get selected? Now there is a thing which is there is a calculation. I mean, you have to look at the number of seats in the first place. Now for English honors in presidency the seats is I guess about 38. If there is 38, there are 38 seats. Then ideally, uh, for example, take it for SC, ST, OBCs, the seats are reserved. Suppose about 10 to 12 seats are reserved for them. Suppose 10 seats are reserved. So from 38, if 10 seats are reserved for the ST, SC and OBC candidates, then for the general it is only about 28 seats. Now, ideally, in order to get selected, if you are a general candidate, then you need to have your rank within 28 in order to get selected, ideally, if this is the case. Okay, we're just considering a situation. And I'm just giving you an example as to how this happens. So, if your rank ideally comes within 28, you will get selected. But the thing is, it doesn't occur like this always. Because there are a lot of other things as well. Like क्या होती है कि अक्सर there are many candidates, suppose there would be many candidates whose rank is within 1 to 28, but suppose 3 4 candidates are like this, who get enrolled, who get admitted into any other college or any other university. Okay, and they leave this college and they get cancelled, so their places get vacant. Also what happens is that some candidates might get enrolled into any other course in the same university. वो लोग like they would leave English, or they might get selected into, they might get admitted into different other courses like sociology, history, political science, if they had given admission tests for those subjects as well and had got selected, then they might get enrolled into those things, those departments as well. So what happens if this be the case, then you need to understand that their places will get vacant. Okay, अगर 1 से 28 के तक, 1 से लेकर 28 तक अगर बहुत सारे कैंडिडेट, सपोज 5 6 कैंडिडेट्स are getting out like this, then their places become vacant. Now to fill up those vacant places, आपकी rank थोड़ी, आपकी selection थोड़ी, you know, that can be easy, because 28 say they would increase it to suppose 32 or 33. Then then if you are from general category and if your score rank is within 30 or 31 or 32, then you have the probability of getting selected. So ऐसे करते करते your rank, you know, it depends कि like
डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस कि कितनी लोग कितनी अच्छी परफॉर्म की है, एंड सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एडमिशन ले रही है. अगर 1 से लेकर 28 तक ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स विल टेक एडमिशन इनटू प्रेसिडेंसी ओनली, then what will happen, there is hardly any chance of getting admitted if you are from general category and if your rank is above 28, if I consider this the case. Okay, and OBC SC ST से अगर आप हो तो the selection is somewhat easier than the general because आपकी rank 40 50 और 60 तक भी हो सकती है. Okay, you have the chances because OBC ST and SC के seats reserved रहते हैं इसलिए. So the thing is कि आपको ऐसे करके कैलकुलेट करनी होगी. So according to my calculation, like if I assume it, if I say, then I would say कि आपकी rank अगर with if you are from a general category, then and if your rank is within 40, basically within 40 अगर है तो आपकी सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, विदिन 40 अगर आपकी GMR है. सो यू टू कीप इन माइंड कि आपको GMR 40 के अंदर लेनी चाहिए, एंड इन वेरी रेयर केसेस इट कैन एग्जिट 40. लाइक आइडियली तो 30 33 के आसपास ही होती है हर साल, लेकिन फिर भी अगर 40 भी है तो भी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स दैट आई टोल्ड कि वैकेंसी हो जाती है, कोई कैंडिडेट्स किसी और कोर्स पे अप्लाई कर लेती है, एंड सो इट हैपेंस लाइक दैट. तो एंड ऑल्सो रैंक कार्ड निकलने के बाद आफ्टर व्हेन यू गेट द रैंक कार्ड देयर आर आल्सो सेवरल अदर प्रोसेस लाइक ई काउंसलिंग की डेट. You need to you will be given the dates of e counseling. Okay, ई काउंसलिंग क्या होती है, जिसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है in their website. Okay, they will give you the website and they will give you the date and timing and you need to upload all your documents. ये काउंसलिंग के बाद आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो लोग बुलाते हैं, and you need to go. Like ranks will be given, like suppose 1 to 10, 1 to 10 की एक date will be given, and then you need to go. If your rank is within 1 to 10, you have to go for physical verification. Then again from 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करते करते they would keep on calling you in slots करते करते वो लोग आपको they would call you. Okay, depending on the slots. And you have to be very very attentive in the whole process. Entrance दे दिया मतलब हो गया is not the thing. Results आ गया, results आने के बाद, रैंक कार्ड आने के बाद असली प्रोसेस शुरू होती है. ई काउंसलिंग रहती है. ई काउंसलिंग एंड ऑल्सो इट हैपेंस कि बहुत सारे कैंडिडेट्स दे मिस आउट द डेट्स ऑफ ई काउंसलिंग. दे फेल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. In those cases also they get cancelled, their admission gets cancelled. So ऐसे करके भी बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है एंड द रैंक गेट्स लोअर. तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ही यू नीड टू वेरी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग्स एंड वेरी अटेंटिवली डू ऑल द स्टेप्स, go through all the steps, do whatever is needed. Okay, this is what I wanted to tell you कि yeah, that's the thing. And another thing that I will tell you कि आप कैसे हाउ विल यू नो कि कितने मार्क्स आने से आपकी रैंक 40 या 30 में होगी. नाउ एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियोस कि ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन अगर बहुत हाई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छी परफॉर्म करी है, देन you need to score, your score should be 100 में से if most of the candidates are getting 80 or 90, then obviously if you are near to 80 or 90, then only you will be get selected. अगर competition is low, like candidates are not performing very well, candidates are perform like average, like 50-60 में बहुत बहुत सारी candidates, like the highest mark hasn't exceeded 60, then the competition becomes easier. Then आप अगर 40-50 भी लाओगे तो भी आपकी selection chances है. तो you're understanding right what I'm saying कि ये डिपेंड करती है कंपटीशन पे कि कितनी कैंडिडेट्स कितनी अच्छी करी है, एंड ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गेट सिलेक्टेड. एंड ideally I would say कि within 100 try to keep the marks above 50, more than 50 अगर है तो you are in the safe side. I feel more than 50 you should target it. Okay, more than 50 होनी चाहिए. आइडियली ये टारगेट लेके चलो कि 50-60 लाइक विद इन दिस रेंज
अगर इससे अच्छा हो तो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी। लेकिन अगर आपके पास लाइक उतनी टाइम नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि एट द लीस्ट ट्राई टू कीप इट एटलीस्ट 50। ओके, क्योंकि इन इंग्लिश एंड सीट्स पे भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि सीट्स भी कम है ना इंग्लिश में। 38 सीट्स है, तो विद इन 38 लाइक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जनरल के लिए बहुत ही कम हो जाती है सीट्स, लाइक इन अनलाइक अदर फील्ड्स, लाइक कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिसमें सीट्स 100 लाइक 80-90 भी सीट्स होती है, उसमें से कंपटीशन लोअर होती है क्योंकि बहुत सारी सीट्स एंड बहुत सारी स्टूडेंट्स विल गेट एडमिटेड, बट हियर द कंपटीशन इज अ बिट हायर बिकॉज द लिमिटेड सीट्स इज देयर। सो या बेसिकली दिस इज द थिंग कि 50 अगर आपकी मार्क्स होगी, 50 से ज्यादा होगी, तो आई थिंक यू आर ऑन द सेफ साइड, यू आर ऑन द सेफ जोन। एंड अगर आपकी रैंक विद इन 40 या फिर 30, 35, 40 ऐसे होगी, तो शायद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। दिस अ रफ एस्टिमेट, डोंट टेक इट टू लाइक दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। ओके, एग्जैक्ट थिंग कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये वेरी करती है ईयर टू ईयर। आई एम जस्ट गिविंग यू a rough estimate depending on the data that I had collected. I had seen from the previous year and last year also I applied for the exam, and I had seen this कि ऐसे ही होती है कट ऑफ्स। सो या, एंड वन थिंग इज दैट कि आप लोगों को you don't have to attempt all the questions, okay, because there is a negative marking, so you don't have to attempt all the questions. Try to attempt only those questions which you are very comfortable about. Yes, I am sure about this question, I can write the answer, I can write the answer correctly, then only you just attempt the question, otherwise don't get into trouble because there is negative marking. नेगेटिव मार्किंग जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि इफ योर मार्क्स इज गेटिंग, if you're getting 40 and if you have answered uh, if you're getting certain negative markings, then आपकी marks कम हो जाएगी। तो try to avoid the negative marking, try to stick to only those questions which you are 100% confirmed। एंड अगर आपकी 50-50, अगर आपकी लग रही है कि चलो ये क्वेश्चन थोड़ी डाउटफुल है, लेकिन 50-50 लाइक यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग टू आंसर्स, देन इफ यू फील कि यस यू कैन टेक द रिस्क, तो रिस्क लो नेगेटिव मार्किंग की। अगर इफ यू फील कि हाँ हो जाएगी, बट अगर आपको लग रही है कि नहीं दिस विल बी टू रिस्की, देन डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जस्ट ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन in a correct way. Make sure that the questions you attempt are correct and you get the full marks from them. Okay, so this is what I wanted to tell you. So yeah.